Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to revise chapter number 2 of Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Thief Story. This lesson has simple story with deep message. This story gives us a very deep message. It is about Hari Singh, who was a thief, and Anil, who becomes the friend of Hari Singh. Anil was a writer. His age was 25. He was a very good person. Hari Singh meets him in a wrestling match, and then Anil takes Hari Singh to his house and teaches him how to read and write. Anil teaches him because Hari Singh was illiterate. He trusts him, but Hari Singh waits for the right moment to steal. अब हरी सिंह क्या था? वो एक थीफ था. जहाँ जहाँ पे भी वो काम करता था, चोरी करने के बाद वो उस जगह को छोड़ के आ जाता था और दोबारा उन लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता था. तो जब उसे अनिल मिला, ही थॉट दैट अनिल वॉज a very simple man, so he becomes friend of Anil. Hari Singh does lot of work for Anil, and he finds the right moment when he could steal. He steals the money of Anil and goes from there forever, but he cannot do so for a long time. He came back to Anil's house because as Anil had taught him reading and writing, so now he wants to be a good friend of Anil. Anil doesn't show that he knows about his theft. अब जब आप चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हरी सिंह ने पैसे चुराए थे तो कहाँ पे पड़े थे पैसे? अनिल के पिल्लो के नीचे पड़े थे. तो अनिल के पिल्लो के नीचे से जब हरी सिंह ने पैसे निकाले, देन अनिल हैड कम टू नो अबाउट इट, बट अनिल डिडंट से एनीथिंग टू हरी सिंह. इंस्टेड ही एक्सेप्टेड दिस. In this way, we see how Anil, who is kind person, reforms Hari's life. So let us do the summary. The narrator of the story is a thief. Narrator कौन है? हरी सिंह. वो एक thief है. It is the false name because he changes his name every month so that he can be saved from his former employers and police. और हरी सिंह की एक आदत क्या थी कि वो जब भी एक जगह से काम छोड़ता था, दूसरी जगह पे जाता था, तो वो अपनी आइडेंटिटी मीन्स अपना नेम चेंज कर लेता था. The narrator met Anil in a wrestling match. Anil was a 25 years old man who wrote for the magazine and earned money to run his life. The narrator was 15 years old. Narrator कौन है? हरी सिंह, who is a thief. He is 15 years old and he was an experienced thief. Anil didn't have much money. Anil was also not very poor, very rich. So Anil said to Hari Singh that if Hari Singh would work for him, then he can stay with Anil. So Hari Singh said that he would cook. Anil took him to his room over the Jamuna sweet shop. Anil made him sleep in balcony. Hari Singh cooked food for him, but Anil didn't eat and gave all meat to a dog. Actually, Hari Singh had told to Anil that he will cook food for him, but Hari Singh didn't know anything about cooking. हरी सिंह ने ये भी झूठ बोला था कि वो उसको कुकिंग आती है, वो उसके लिए कुकिंग करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि उसको कुकिंग की ABC भी नहीं पता थी. So, but by the time what happened that Anil taught Hari Singh how to cook, and now Hari Singh started cooking very well, and they both were living very happily. After 1 month, the narrator thought that he had not stolen a single thing from Anil's house. अब हरी सिंह क्या था? वो एक thief था by profession.
तो उसने सोचा कि अनिल के यहाँ से तो मैंने कुछ भी चुराया नहीं है, तो वो अब चोरी करनी चाहता है। अनिल हैड ट्रस्ट ऑन हिम एंड ही हैड गिवन हिम द की ऑफ हिज रूम ऑल्सो। ही कुड कम एंड गो अकॉर्डिंग टू हिज ओन। One day Anil brought a bundle of notes and kept it under the mattress in the presence of Hari Singh. एक दिन अनिल जो भी स्टोरीज राइटिंग्स लिखता था उसके बदले में उसको जो मनी मिली वो लेके आया और हरी सिंह की प्रेजेंस में उसने वो अपने मैट्रेस के नीचे रख दी। द नरेटर थॉट दैट ही हैड नॉट डन हिज बिजनेस फॉर सम टाइम एंड इट वॉज द राइट टाइम टू डू। अब हरी सिंह ने पैसे देख लिए थे, वो तो पहले ही सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से मैंने चोरी नहीं की है, तो उसको लगा कि इट इज़ द राइट टाइम नाउ। ही थॉट if he didn't take the money, Anil would waste it with his friends and after all he didn't pay him. So it was right to steal. He waited for the opportunity and when he noticed that Anil was sleeping, he slipped his hand under the mattress and took the money, and after taking the money he went to the railway station. But he couldn't stay at the railway station for a long time and he came back to Anil's house. The narrator's mind was full of conflict now. He found himself when he was going back to Anil's house, he couldn't go directly to Anil's house, but he reached in an open ground. It was early November and it started drizzling. बारिश होनी शुरू हो गई. So he went under the clock tower and it showed midnight. He thought about notes and took out and found them wet. अब उसने notes निकाले, उसने देखा कि ये गीले हो चुके थे. He thought that Anil had taught him how to read and write. मतलब अब क्या था, जो हरी सिंह था वो एक चेंज्ड पर्सन बन चुका था, क्योंकि अब उसने लिखना पढ़ना सीख लिया था. और किसने सिखाया था उसे लिखना पढ़ना? अनिल ने. तो वो सोचता है कि अनिल हैड टॉट हिम हाउ टू रीड एंड राइट. नाउ ही वॉन्ट बी एबल टू लर्न एंड कुक फूड फॉर हिम. राइटिंग कुड ब्रिंग हिम मोर देन अ फ्यू ₹100. अब वो सोचता है कि अगर सपोज वो भी अनिल की तरह कुछ लिखना शुरू कर देता है तो उसके पास चोरी से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं. इट वॉज सिंपल टू बी अ थीफ एंड टू बी कॉट टू बी रियली बिग रिस्पेक्टेबल मैन वॉज समथिंग एल्स. These thoughts led him back to Anil's house. He was nervous and crept again secretly to his room. वो नर्वस तो बहुत था हरी सिंह, and he entered into the room. Anil was still sleeping and Hari Singh kept the money back under the mattress. The next morning, Anil woke up early. He made tea. He had 50 rupees in his hand. He gave 50 rupees to narrator by saying that he would be paid regularly now. तो क्या हुआ, जब सुबह हरी सिंह ने उठ के चाय बनाई, मतलब ये सब रात में ही हो गया कि वो रेलवे स्टेशन पे गया, उसने टिकट खरीदी, लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ा क्योंकि अब वो सोच रहा था कि अनिल ने उसे बहुत कुछ सिखाया है एंड ही कांट लीव अनिल इन दिस कंडीशन. सो जब अनिल सुबह उठ के देखता है कि उसके पैसे वहीं पे थे तो वो उसमें से 50 रुपीज़ हरी सिंह को दे देता है और बोलता है दैट नाउ यू वुड बी paid regularly. The narrator took the note and found it wet and understood that Anil must have known about the episode of that night. नोट वेट था तो मैट्रेस के नीचे तो वेट नहीं हो सकता. तो अब हरी सिंह को लगता है कि शायद अनिल को मेरे बारे में पता चल गया है, कि हो सकता है उसने मेरा पीछा भी किया हो रात को, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी दैट हरी सिंह वॉज अ changed man now. So that's all with this chapter. Now in next class we'll revise the other chapter. Okay, bye. Have a nice day ahead.